Hello students, our exams are approaching with 2 months in hand. Now let us do some writing practice. How to present the answer in the answer sheet, how much we should write is very important for any question. So for this, let us do the practice with the help of sample papers. Here we will do section A and section B of sample paper 1. सेक्शन ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले ऊपर सेक्शन ए लिखिए. क्लियर. सेक्शन ए में टोटल आपके पास 14 क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे और 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. टोटल मार्क्स अलॉटेड हैं सेक्शन ए के लिए 22. सी द क्वेश्चन नंबर 1. नेम एनी 2 एमिनो एसिड्स दैट प्रोवाइड पॉजिटिव चार्ज टू हिस्टोन प्रोटीन्स. आंसर इज लाइसिन एंड आर्जिनिन. इसमें एक ही पार्ट है तो आप एक ही लाइन में आंसर को मेंशन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. इसके 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है. नेम द मटेरियल यूज्ड एज मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट देखिए एंड मेंशन इट्स रोल. दोनों आंसर्स को अलग अलग लाइन से स्टार्ट करना होगा आपको. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है एगरोस एंड सेकेंड पार्ट का जो आंसर स्टार्ट करेंगे वो सेकेंड लाइन से स्टार्ट करिए. इट प्रोवाइड सीविंग इफेक्ट फॉर डीएनए टू रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज. Come to question number 3. Name the unlabeled area A and B. डायग्राम देखकर आपको unlabeled area A और B को बताना है ये क्या है. Unlabeled area A and B of the pie chart representing the global biodiversity of invertebrates showing their proportionate number of species of major taxas. A is insects and B is mollusca. दोनों को सेपरेट लाइन में लिखिएगा. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट्स हैं. दोनों पार्ट्स को सेपरेट लाइन से स्टार्ट करना है हमें आंसर में. व्हाट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी टू रिलीज द हार्मोन. ये फर्स्ट पार्ट है. इट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड देन नेम द हार्मोन. ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन. तो ये दोनों लाइंस में आपको 2 आंसर्स इसके मेंशन करने हैं. क्वेश्चन नंबर 5. अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस. यहाँ पर आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है. इस क्वेश्चन को करने के लिए इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो पहले आप नंबर ऑफ स्टेप देख लीजिए कितने हैं. यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं. पॉलन ग्रेन्स, स्पोरोजिनस टिश्यूज, मेल गेमीट, माइक्रोस्पोर टेट्रेट एंड पॉलन मदर सेल. आपको आंसर में ये 5 स्टेप्स को मेंशन करना है. ये ध्यान रखिएगा आपको. हम बहुत बार एक ना एक स्टेप मिस कर जाते हैं. तो सबसे पहले आप नंबर को काउंट कर लीजिए. सो आंसर इज स्पोरोजिनस टिश्यू, pollen mother cells, microspore tetrad, pollen grains and then the male gamete. Come to question number 6. Mention the 2 additional processes which heterogeneous RNA has to undergo after splicing to become functional messenger RNA. It is capping and tailing. तो आपको एक ही लाइन में इस आंसर को मेंशन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Name the last of the chromosome to be sequenced during Human Genome Project. ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का. क्रोमोसोम 1 एंड हाउ मेनी जीन्स डज इट कैरी. ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का. इसको सेकेंड लाइन से स्टार्ट करिए. इट हैज 2968 जीन्स. क्वेश्चन नंबर 8. द मियोसाइट ऑफ राइस हैज 24 क्रोमोसोम्स. राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स. ए एंडोस्पर्म, बी सिनर्गिड्स. एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है. 3 एंड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो यहाँ पर 36 क्रोमोसोम होंगे और सिनर्गिड्स हैप्लॉइड होते हैं तो क्रोमोसोम का नंबर 12 होगा. सो ए इज 36, बी इज 12. ओके, सो लाइक दिस यू शुड राइट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. डिफाइन एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी क्या है? ये एक ही सेंटेंस में आप लिख सकते हैं. इट इज लॉस और गेन ऑफ 1 or more क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन 10 पर आइए. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरेंटल ट्रेट इज हायर देन 25% इन अ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट द 2 जीन्स. इस क्वेश्चन में एक ही पार्ट है सो यू कैन राइट आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली. सो आंसर इज द जीन शोज लिंकेज एंड दे डोंट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. क्लियर. Now come to question number 11. Assertion reason का क्वेश्चन है ये and you have to choose one out of A, B, C, D after reading assertion and reason statement. Assertion statement देखिए. India is one of the 12
mega diversity countries of the world. Yes, this is the correct statement. See the reason. India has only 2.4% of the land in the world, but its share of global biodiversity is 8.1%. This is correct statement and correct reason also. So answer is A. इसको आंसर को कैसे लिखेंगे आप? Answer 11A. Also write along with this, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Okay. Now come to question number 12. Assertion statement देखिए. Apple and cashew are false fruit. Yes, this is the correct statement. Now see the reason. Thalamus contributes to fruit formation in apple and cashew. This is correct statement and correct reason also. So answer यहाँ पर क्या है? A. Answer इसको कैसे लिखेंगे? Answer 12A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Okay. Question 13. Assertion statement देखिए. Retroviruses are used efficiently as vectors in recombinant DNA technological experiments. Yes, ये correct statement है. Retrovirus को use किया जाता है as vectors in recombinant DNA technological experiments. Now see the reason. Agrobacterium tuminifaciens is the most commonly used vector for transformation of plant cells. Yes, this is also correct statement, but it is not the correct reason for the assertion. तो यहाँ पर आंसर है B. आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर 13 B. Both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Question number 14. Assertion statement देखिए. The endometrium of uterus undergoes cyclical changes during menstrual cycle. Yes, this is the correct statement. Now see the reason. Implantation of the blastocyst occurs at the endometrium lining. This is also the correct statement but not the correct reason for the assertion. So answer is B. Answer लिखेंगे इसका. Answer 14B. Both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. Clear? Question number 15. यह case based question है. You have to read the given matter and 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं. यहाँ एक टेबल दिया गया है जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1. द जीनोटाइप ऑफ W कैन बी. W का जीनोटाइप IA एंड IA स्मॉल I दोनों हो सकता है क्योंकि ब्लड ग्रुप A है. सो चॉइस C इज द करेक्ट आंसर. बोथ A एंड B. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. द ब्लड ग्रुप्स इन Y एंड Z आर रेस्पेक्टिवली. Y का ब्लड ग्रुप होगा B एंड Z का ब्लड ग्रुप होगा AB. सो चॉइस B इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. द जीनोटाइप ऑफ X इज small I. So choice C is the correct answer. Question number 4. The antigen present on red blood cells of Y phenotype. Antigen B will be present. So correct choice is B. Question number 5. The genotype IB and small I indicates IB is dominant over small I. So choice B is the correct answer. एंड यू हैव टू नोट दिस. जैसे साइड में आंसर लिखे गए हैं इसी तरीके से आपको आंसर शीट में प्रेजेंट करने हैं. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16. स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 16:1 to 16:5 गिवन बिलो. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. द ड्रग हुज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज गिवन अबव इज. इट इज मॉर्फिन. सो करेक्ट चॉइस इज सी. सेकेंड पार्ट देखिए. इट्स सोर्स प्लांट इज पेपरवर सोमिनिफेरम. सो करेक्ट चॉइस इज बी. थर्ड क्वेश्चन. इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एज सिडेटिव एंड पेनकिलर. सो करेक्ट चॉइस इज डी. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अनदर ड्रग बाय एसिटाइलेशन. सो करेक्ट चॉइस इज ए. फिफ्थ क्वेश्चन असर्शन रीजन का है. असर्शन स्टेटमेंट देखिए. When drugs are taken for a purpose other than its medicinal use or in quantities or frequency
that impairs the physical, physiological or psychological functions, it is referred to as drug abuse. Correct. This is the correct statement. Now see the reason. Drug abuse has been on the rise, especially among youth. This is also correct reason but not the correct explanation for the assertion. So answer is B. So लिखिए answers को. Answer is B. Both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Okay. Come to section B. Section B में 2 marks के क्वेश्चन होंगे और टोटल क्वेश्चन होंगे 9. मार्क्स अलॉटेड हैं 18. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए. ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक एंड लेबल द 7 cells present in it. Draw the diagram as shown with the pencil and label the 7 cells, 3 antipodal cells, 1 central cell, 1 female gamete and 2 synergates. Okay. Now come to question number 18. Name the source of organism of statins. ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का. आंसर इज मोनेस्कस परप्यूरस. सेकेंड पार्ट देखिए. एंड मेंशन इट्स एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी. ये सेकेंड पार्ट है. इसको सेकेंड लाइन से स्टार्ट कीजिए. स्टेटिन्स आर यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स एज दे कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. क्वेश्चन 19. Mention one similarity and one difference between geitonogamy and xenogamy. आंसर देखिए कैसे लिखेंगे. Similarity. Both require a pollinating agent as pollen comes from different flowers. Now write the difference. Difference को कॉलम फॉर्म में लिखिएगा. 2 कॉलम बनाइए. 1 कॉलम में geitonogamy लिखिए. सेकेंड कॉलम में xenogamy लिखिए and write one difference. Clear. Question number 20. डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस. यहाँ पर भी डिफरेंस लिखना है. कॉलम बनाइए एंड यहाँ पर 2 डिफरेंसेस लिखिए क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. एक्सोन्यूक्लियसेस में देखिए फर्स्ट पॉइंट, दे आर एंजाइम दैट रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. एंड इन एंडोन्यूक्लियसेस दे आर एंजाइम दैट मेक कट्स विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट्स. सेकेंड डिफरेंस देखिए. एक्सोन्यूक्लियसेस इट इज नॉट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, while endonucleases it is useful in genetic engineering. Clear. Question 21. Pollen grains are well preserved as fossils. Analyze the properties of pollen grains that help in fossilization. Now see the answer. Pollen grains can be best preserved as fossils because point number 1 देखिए, the sporopollenin of enzyme can withstand high temperature. Point number 2, no enzyme that can degrade sporopollenin is known so far. Point number 3, it is resistant to action of strong acids and alkali. So out of these 3 points, you must mention 2 points because this question is for 2 marks. Come to question number 22. Name the interaction in each of the following. A. Cuckoo lays eggs in the nest of a crow. Brood parasitism. B. Wasp pollinating fig inflorescence. Mutualism. C. Cuscuta growing on a shoe flower plant. Parasitism. D. Orchid growing on mango tree. It is commensalism. Write the answer as shown here. A, B, C, D अलग अलग लाइन्स में इसको मेंशन कीजिए. क्लियर. क्वेश्चन 23. यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स को मैच करना है. कॉलम 1 को कॉलम 2 से. देखिए इसको कैसे आंसर लिखेंगे. कॉलम 1 से A पॉइंट लीजिए. लैक्टोबैसिलस A मैच कर रहा है कॉलम 2 के नंबर 3 लैक्टिक एसिड से. B. क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम मैच कर रहा है 4 से ब्यूटरिक एसिड. C. एस्परजिलस निगर मैच कर रहा है नंबर 2 सिट्रिक एसिड से. एंड E. एसिटोबैक्टर एसिटाई मैच कर रहा है नंबर 1 एसिटिक एसिड ऑफ कॉलम 2 से. सो लाइक दिस यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 24. हाउ इज DNA आइसोलेटेड इन द प्यूरिफाइड फॉर्म फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल. कैसे आइसोलेट किया जाता है DNA को. सी द स्टेप्स इन्वॉल्व. स्टेप नंबर 1, treat bacterial cell with lysozyme to remove cell wall. Next, treat with protease to remove proteins
associated with DNA and with RNases to remove RNA. Next, other molecules can be removed by appropriate treatment. And the last step, add chilled ethanol to precipitate DNA. सभी स्टेप्स को अलग अलग लाइन से स्टार्ट करिएगा. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25. Draw embryonic stage that gets implanted in human uterus. It is blastula. Draw the diagram with pencil and label the two parts, inner cell mass and trophoblast. Second part of the question देखिए. State the functions of the two parts labeled. Trophoblast का क्या function है? Trophoblast form the fetal part of placenta and inner cell mass form the embryo proper. Clear? So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.